fundamental rights, and here the constitutional aspects. In that, we came across to know that fundamental rights comes under part 3 to the Constitution, and that too under Article 12 to 35. We came across to know that 12 and 13 in one group and 33 to 35 in other groups. One is the base and other are the principles. And the core fundamental rights that exist between 14 to 32 remains 6 in number. मतलब चलो फिर से देख लेते हैं कि ये जो 12 to 35 है, इसको हम लोगों ने 12 and 13, then comes 14 to 32, and then 33, 34 and 35 के तरफ से देखा था. This 12 is in context to state what the state is all about. रीजन बिहाइंड कि जब फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स पे हम थे तो हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट. अगेंस्ट द स्टेट, so who the state is, that we will see in Article 12, and it comes in consistence with the law. Then what the law is, that under Article 13 we will come to डिस्क्लोज ऑल दोज थिंग्स. अभी हम लोग इसको और भी डिफाइन करेंगे. फिर हमने कहा था कि आर्टिकल 35 इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द एंटायर पावर इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी चेंजेस टू बी मेड इन पार्ट 3 टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रोविजन करना हो तो वो किसको राइट दी गई है? पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर. नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, इट इज द पार्लियामेंट. ठीक है. एंड 34 इज ऑल अबाउट द कोर्ट मार्शल और मार्शल लॉ. इट्स अबाउट द मार्शल लॉ. मार्शल लॉ और मिलिट्री रूल, कि जहां कहीं भी मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल लगा होगा तो उसका पर्पस है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके, क्योंकि वी ऑल आर ए डेमोक्रेटिक नेशन, सो दे विल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड देन विल गिव इट टू द डेमोक्रेटिक पैटर्न, विल मेक इट टू द डेमोक्रेटिक पैटर्न. ठीक है, और फिर जनता को वो सत्ता दे देंगे. तो जिस समय मार्शल लॉ लगा होगा उस समय अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एंड इट विल नॉट बी एंटरटेन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब एनी कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब यहां पर है कि सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. ठीक है. देन 33 इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू ग्रांट fundamental rights and or to take back fundamental rights in totality or in number what wants to deliver. ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स या कुछ फंडामेंटल राइट्स सबको या किन्हीं को दे सके या उसको वंचित कर सके, यानी उसको न दे. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द Parliament. So under 33, since beginning, Parliament has denied the fundamental rights to the armed forces, paramilitary forces, the state police, the personnel at the that is information and communication technology related with that one, and the civilians in the cantonment board area में रहने वाले, इन लोगों को पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया है. ठीक है, डिनाई कर दिया है. रीजन क्या है? ड्यूटीज कमिंग इन बिटवीन द
पर्सन्स एंड द स्टेट, है ना, ड्यूटी की वजह से। क्योंकि अगर इनको फंडामेंटल राइट्स होगा और ये अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करेंगे तो इनकी ड्यूटीज हैम्पर होगी, और जब ड्यूटीज हैम्पर होगी तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, security of the nation. Sovereignty and the security of the nation is going to get hampered. Got it? So that's why they being denied of. है ना? तो ये provisions है, ये rules है, principles है 33, 34, 35 में. What about the 12 and 13? Before going to the main 6 fundamental rights over here. Here, under Article 12, it has been mentioned about the state, that how come state has been defined. So in overall constitution, if we look over, state has been differently defined at many places in the constitution, है ना, just like in Article 1, Article 12, Article 36 and Article 152, state has been defined in these articles. लेकिन हर जगह इनका डेफिनेशन जो है इनके एक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल 1 में स्टेट समथिंग डिफरेंट है, आर्टिकल 12 और 36 में डिफरेंट है, और आर्टिकल 152 में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। आर्टिकल 1 में जो इसका डेफिनेशन है वो इसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बताया गया कि व्हाट द स्टेट इज ऑल अबाउट, दैट स्टेट इज व्हाट इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, and here state has been defined in terms of the entire territory of India. Got it? Secondly, when it comes to 12 and 36, in both cases it has been defined by its action. अब इसका डेफिनेशन कैसे है? एक्शन की वजह से, what it does. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहता है कि स्टेट is accountable to provide the basic rights and secondary rights to the citizens. Accountable है कि नहीं accountable है? Basic rights के रूप में पार्ट 3 and secondary rights के रूप में पार्ट 4 में जो वेलफेयर है और पार्ट 3 में जो राइट है ये कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो एक्शन के बिहाफ पर एक जगह पर मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कहां पर? प्राइमरी राइट्स को लेकर के, यानी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। सेकेंडरी राइट्स को लेकर के इट इज नॉट मैंडेटरी, दैट स्टेट हैज टू प्रोवाइड। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टेट एक्सचेकर, जो गवर्नमेंट का खजाना है उस पर निर्भर करता है। गवर्नमेंट कैपेबल होगी तो वेलफेयर देगी, नहीं कैपेबल होगी तो नहीं देगी, बट विल हैव टू प्रोवाइड। इट मींस एक्शन के, व्हाट एक्शन टेक्स के रूप में। और आर्टिकल 152 में जो स्टेट है वो स्टेट है अंडर द यूनियन देयर एग्जिस्ट अ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। गॉट इट? जैसे अलग अलग 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट के तहत स्टेट को डिफाइन किया गया, दैट इज स्मॉल एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज अ स्टेट विथ डुअल गवर्नमेंट, एनीवे। सो यहां पर जब हम देखते हैं कि एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइंड है, तो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड बट इट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड। डेफिनेशन नहीं बल्कि क्या है? कैरेक्टर के अकॉर्डिंग दिया गया है। व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर अ स्टेट पोजेसेस। ठीक है, तो कहता है कि स्टेट इंक्लूड्स अंडर आर्टिकल 12 दैट स्टेट क्या है? दैट स्टेट includes number 1 union and the state government, union and the state government to be called as state. Secondly,
union and the state legislature. Got it? That is the parliament. Union legislature matlab parliament, and state legislature matlab the state legislature itself. Third, legislature and its members. Got it? The third one is the ministers. That is both union and states minister. Got it? Then fourth, the local self government, that is urban local bodies and the state local and the rural local bodies. Got it? And fifth, any private institutions or individuals assisted by state in any form or aided by, better to say that, aided by state in any form, सहायता प्राप्त, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल. Got it? So those who comes under this category, they will be called as a state, and their main priority is to provide citizens or people their rights. Got it? So it is the very duty of the state to provide the rights. If not, it will be a kind of violation. Rural local bodies, है ना, पंचायत जिसको कह सकते हो. और क्लियर कर दें, urban local bodies, municipality and the panchayat. Now it is clear.